This is the second class on operating systems. In the last class, we learned what is an operating system, what is its function. We learned that why operating system is necessary for any computer system. We learned what is the difference between CUI and GUI, character user interface, and graphic user interface. We also got to learn about the functions of the operating system, and we divide it into three categories where we learned that one of it is connected with the resource management of hardware and software, which includes booting, performing of the basic task, resource management, and user interface. Another feature provides with the data and application. Okay, these are the parts which are required or which form the basis of the information that is being supplied to the computer, and the third one being the one that entirely deals with the management of the processes and devices, so which includes process management, file management, memory management, and device management. So under these broad categories, first we came to know what is it mean by booting of the computer, and what are the two types of booting, like cold booting and warm booting. Then we learned about operating system resource management, how different of parts of the operating system help different parts. For example, some part of the operating system are meant to interact with the hardware. Some part of the operating systems are meant for the programmers. And lastly, operating system provides a basis for the users who use the computer for various application. Operating system provides all. We learned that any process or computer process will have four things. One is resources, second program code, third program status and data. They all together creates a process. And then depending upon the process could be running process or waiting processes. Under file management, we got to learn, uh, no, we haven't gone to file management. We have to study today onwards from file management. So file management, what does this mean? A file is basically a useful data. It is a block of data. This is available to a computer program and usually stored in the medium, a ROM medium like hard disk or maybe any solid state drive. Operating system helps the user to create a file. Under a program, we can create a file means we can create a block of data. For example, and if under MS Word, I am creating a document, the document is a block of data. This block of data itself tries to perform certain work. This block, if it is put into MS Word, then it opens up into a Word document. So generally the files are stored in the hard disk, and the operating system creates these files, helps create these files, helps copy, delete, move, rename the file. And very importantly, it keeps a track of its location. Under C drive, under which folder, what is the name of the file, when was it accessed last time, when it was modified last time. You can always see that whenever you have any browser window open. Browser means I'm talking about computer browser, which is otherwise called as File Explorer. Now, for example, I am sharing right now with you a screen. In this screen, you see that there are different files and folders. When I change the view, by changing the view, I can come up with newer arrangements. For example, if I go to details, it will show you the file's name, the status, the date last modified, what is the size, etc. And there could be other important areas also, like date created, who was the author, tag, etc. These are the additional things that can be connected with the file.
So all these data are being tracked into the computer application system. One moment, I'm facing some problem to share the file. So in this way, we see that file is basically a block of data. Are you able to see a PDF document? Yes, sir. Now, file operations and the use. Already you know, we can create a file, Control N, open a file, Control O, Control X for delete, close, Alt F4, read is like simply reading a file, write or seek means search. We can all do all these functions, operations on a file. A file has an extension, and each extension actually groups what type of file does it belong to. From the extension, we can know the nature of the file. So it could be .txt, .dat, .hlp, .bak, .wav, .xls, jpg, gif. So these are the file extension formats. Anything which you are not able to understand, you can ask me. So these file extensions are limited given here. It's not like that the files could be of only these extensions. There could be various other forms of extension too. Another important function of operating system is memory management. We discussed in the last class that operating system gives a stipulated memory to the running processes. It, depending upon when there is a multiple task going on, it keeps on tracking which application requires how much of memory, and accordingly it allocates the memory. Not only that, operating system also ensures that the memory is not cluttered. So that is why it has a process called defragmentation. Can anyone tell me what does it mean by defragmentation? It has been taught to you already. Defragmentation, if you remember, it is the process by which the files are being moved to one location. Instead of fragmented memory, the memory is being moved and aggregated at one place, freeing some disk space. Operating system helps in device management. I gave a hint last time that whatever peripherals are there, mouse, printer, or any other peripheral, the computer is the place where connectivity of all these items are checked. Not only that, it checks whether the driver for that software is loaded properly or not, if it is working properly or not. So in this way, it manages the vast diversity of implementation of devices. We remember that each device comes with a driver software. This driver software enables the operating system to communicate with the peripheral device. And in this way, a printer is able to operate. If all the driver softwares are preloaded into the operating system, then the operating system is going to be blocky and bulky. So to avoid that, drivers are separately installed by downloading them from the source site. Operating system evolved with time. We got a glimpse last time that the first set of operating systems were called as batch processing operating systems. Then it was single user, single tasking, then multi-programming operating system, single programming operating system, multi-programming. Then after that, we got to know, till this point we had discussed. Yeah, right. So any doubt in this single programming or multi-programming operating system, both of you? Any doubt? Has anyone got?
No, sir. Multitasking operating system is a single user variation of multi-programming concept. ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ single user simultaneously computer ରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ task perform करे ତାକୁ ଆମେ multitasking system ବୋଲି କହୁ. Multitasking eases user operation and enhances the productivity as they can complete more than one job at the same time. For example, when we are typing in Microsoft Word and listening to music and downloading from internet, we are actually performing 3 tasks at the same time. This is called as a multitasking operating system. Had this not been the case, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ music ଶୁଣୁଥିବେ ଆପଣ typewriting କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ music player କୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, file ଟାକୁ open କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ typing କରିବେ etc. Windows operating system, Apple's Mac operating system, they both are multitasking. Now let us understand the difference between multi-programming and multitasking. Multi-programming or multitasking ଭିତରେ difference ଟା କ'ଣ? Multi-programming can be said to be an inter-leveled execution of multiple jobs at the same or by different users in a multi-user system. एका संगरे आपण गोटिए किंबा अलगा अलगा यूजर अनेक गुड़िए जॉब जदि करूचंती, राइट, ताको हमें मल्टी प्रोग्रामिंग बोली कहू. ता माने at one point of time अनेक जन यूजर से कंप्यूटर को एक्सेस करिथिबे आउ ताको यूज करूथिबे. जेमति कि हमर सर्वर रे जो ऑपरेटिंग सिस्टम गुडा का व्यवहार करा जाय. सर्वर इज अ स्पेस जोटाकू अनेक गुड़िए सोर्स अनेक गुड़िए कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर एक्सेस करूथांती. तो सर्वर जो ओएस टा रहिबो सेटा मल्टी प्रोग्रामिंग हेले बोल. किंतु मल्टीटास्किंग टा होची एका संगरे अनेक गुड़िए टास्क रन करिबा, अनेक गुड़िए टास्क रन करिबा. जरूरी नहीं कि अलग अलग प्रोग्राम रन हो. टास्क शुड बी डिफरेंट. Now, multi-threading operating system. एबे ताकू बुझिबा पई आपनको बुझियो पड़िबो व्हाट डज इट मीन बाय थ्रेड. हां सर, टास्क माने धरंतु मु वर्ड, पावर पॉइंट आ एक्सेल एका संगरे रन करूची, ये हला तीनटा टास्क. मु किंतु मो कंप्यूटर रे रन कला बेलकु मो कंप्यूटर रे वर्ड रन कला बेलकु आपण मध्य सेही कंप्यूटर टाको एक्सेस करिकि जदि सेतिरे एक्सेल करूचंती ताहले एटा हला मल्टी प्रोग्रामिंग. बुझेला कि एका संगरे ये गोटे रु अधिक यूजर को अलाउ करे मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम गुडा. सेति पई आपको आपण सर्वर किंबा मेन फ्रेम रे पाइबे. बुझिले ना? आ कोन डाउट रहला? आगे एबे हमको बुझियो पड़िबो व्हाट डज इट मीन बाय मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. ता पई आपनको बुझियो पड़िबो व्हाट इज थ्रेड. वेल, कंप्यूटर रे दीटा जिंस बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले करे ऑपरेटिंग सिस्टम रे. गोटे होची कर्नल और गोटे होची थ्रेड. थ्रेड इज अ पॉपुलर वे टू इंप्रूव एप्लीकेशंस. ऑपरेटिंग सिस्टम जोटा की गोटे सॉफ्टवेयर रो डिफरेंट पार्ट्स प्रोग्राम को एका संगरे रन करिवो ताकू मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम बोली कहा जाय. एबे मु बुझौची एटा कोन. थ्रेड होची गोटे एमिति लिंक जोटा की सीपीयू संगरे कनेक्टेड. माने जदि मु एबे एमएस वर्ड खोलीची, एमएस वर्ड रो प्रत्येकटी बटन, प्रत्येकटी आइकन ए सबु जाक प्रोसेसर सहित गोटे लिंक तयारी करे ताकू हमें थ्रेड बोली कहू. क्लियर? अब मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम माने एका संगरे गोटे सॉफ्टवेयर रो पार्ट प्रोग्राम अलगा अलगा सिस्टम्स रे एक्सेस ही परिबो. आर भलो एग्जांपल होची क्लाउड कंप्यूटिंग थ्रू विंडोज एक्सपी, एनटी, विस्ता एटसेट्रा. जेमति कि गूगल डॉक.
अब गूगल डॉक गोटे एभली डॉक्यूमेंट जोटा को आपण ब्राउजर विंडो रे एका संगे 5 जन यूजर लॉगिन करके एडिट करि परिबे। क्वेश्चन आसुची एटा होची केमती? एटा हबा पछरे कारण होची that they operate in multi-threading operating systems. Time sharing operating system, it is a mechanism. It actually ଯେତେବେଳେ develop କରୁଥିଲା computer time sharing basis ରେ develop କରୁଥିଲା। ଏଥିରେ simultaneous interactive use of computer system by many users it permits, but not at one time। गोटे समय रे नुहे, अलगा अलगा समय रे। ता माने CPU रा टाइम को यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, यूजर 4 अलगा अलगा समय रे एक्सेस यूज करि परिबे। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में CPU switches between multiple jobs so frequently that every user receives an immediate response in few seconds। To give an example, आपनकर जो सर्वर गुडा करू इंटरनेट बैंडविड्थ दिया जाउछि। फॉर एग्जांपल आपण गोटे कनेक्शन नै चंती 4GB, तो से आपन को प्रॉमिस करथिला कि आपण 4 मेगाबाइट पर सेकंड डाउनलोड पाई जिवे किंबा 100 MB पर सेकंड डाउनलोड आपण स्पीड पाइबे। किंतु जेते बेले आपण घरे आसी कि सेटा को लगौचंती, से सिस्टम टा को देखुचंती, डाउनलोड करचंती, आप देखुचंती कि अरे 100 MB तो पर कथा, 100 MB पर सेकंड तो पर कथा, ये तो 10 MB 12 MB रे अटकी जाउछ। अब क्वेश्चन है कि कहीं की कमी गला, कहीं की आपन स्पीड डाउनलोड सेति की पाइलेनी। आ परछे थिबा इनबिल्ट करंटी होची कि ये जो जगह ऑपरेट करे ये गोटी यूजर को एका संगरे डेटा एक्सेस दब नहीं, से माने टाइम शेयर करिवे। ता माने प्रत्येकटी टावर रु ता पाखरे थिबा हजार हजार जो ग्राहक अछंती समस्तक डिवाइस बिटकू डेटाटा स्प्रिंकल हेके आस्तो। आपण मार्क करथिबे जो चाष जमी रे स्प्रिंकलर थाए, गोटे गोटे पानी स्प्रे करबा पे स्प्रिंकलर थाए, से गोटे रोटेशन घुरिला बेलकू अनेक गुड़िए जगह पानी टाको से पके देथियो। तो ठीक से भली एई सीपीयू गुडा को कौन करंती एका संगरे अनेक गुड़िए यूजर सहित कम्युनिकेट करंती, किंतु एते फास्ट हुए कि आपण विद इन सम सेकंड्स आपण कम्युनिकेशन पाइबे। तो आपण बुझी जिवे, आपण को लागिबनी कि आपण डिस्कनेक्टेड हे चंदी, काने एक्सक्लूसिवली आपण को 100 Mbps स्पीड देला बेलको एता कर इंफ्रास्ट्रक्चर और तार फाइबर ऑप्टिक एगुडा कर खर्च बढ़ी जी। सो से माने एबडी टाइम शेयरिंग अलाउ करंती। ओके, ताकू हमें मोबाइल फोन रे कहू टीडीएमए। टीडीएमए गोटे प्रकार सर्विस टाइम डिवीजन मल्टीपल एसेट मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी रे एटा को डिस्कस करा जाय। सो एथि एबडी भाबरे प्रत्येकटी यूजर रो गोटे छोटा स्लॉट of the processor time and execution दिया जाए, right? ए टाइम पीरियड टाको कहा जाए टाइम स्लाइस, टाइम स्लॉट और क्वांटम टाइम। एटा इवन गोटे सेकंड मध्य नु, एटा 10 रु 100 मिली सेकंड। ता माने 10 रु 100 मिली सेकंड भितरे कंप्यूटर यूजर से शिफ्ट करी करी चलथिबो। So the user literally will not know even कि तारा resources को देखो time share होची। टाइम शेयरिंग सिस्टम रा बेनिफिट होची एटा गोटे सीपीयू रा आइडल टाइम टाको यूज कर दिए। सीपीयू आ अलसुआ है कि बसी की रहेनी। फॉर एग्जांपल आपण गोटे डेटा टे प्रोसेस करि सरला परे सीपीयू सेति की जोरे फंक्शन करनी जति करबा दरकार, तो सेही टाइम टारे सीपीयू ऑन तो अछि ना, किंतु इट इज नॉट प्रोसेसिंग फास्ट। सेति पई एई प्रोसेस से ताको बांटी दिया जाए। समझते बुझी परले व्हाट इज दिस मल्टी थ्रेड? अच्छा, माने टाइम शेयरिंग मल्टी थ्रेड कला। नेक्स्ट कमिंग टू मल्टी प्रोसेसिंग, एटा तो हेसलानी। मल्टी प्रोसेस तो हम डिस्कस करले परा नहीं, मल्टी प्रोसेस करने मल्टी ना सर, मल्टी प्रोसेस करने मल्टी यूजर चाहिए। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम uses 2 or more processors, that means multiple microprocessors in the single computer system,
आजिर समय जो अधिकांश कंप्यूटर गुड़ाक ये मल्टीपल प्रोसेसर को व्यवहार करती डुआल कोर क्वाड्रा कोर ऑक्टा कोर ये जो ना गुड़ाक आपण शुणुचंती ये गुड़ाक मल्टीपल प्रोसेसर एठी गोटे कंप्यूटर रो मेमोरी जोटा भी थाउ ना कहीं ता सहित दीटा प्रोसेसर किंबा दुई रु अधिका प्रोसेसर को जोड़ा होता है प्रत्येक टी जंती कि एठी गोटे बापटे सीपीयू 1 सीपीयू 2 एटा आपण डुअल कोर रु प्रथमे पाइले माने मने थिबो जदी बहुत दिन आगरु गोटे प्रकार मोबाइल और कंप्यूटर आस्तला इंटेल डुअल कोर प्रोसेसर से डुअल कोर प्रोसेसर माने सेथरे दीटा प्रोसेसर रहिला तो कंबाइन कर दिया जाय छै प्रत्येक टी प्रोसेसर इन टर्न तार इनपुट आउटपुट को ग्रहण करे. So in case in this system, a complex program can be divided into smaller part and eka sangere by multiple processors aku process kara jay. Result benefit आपण बहुत शीघ्र गोटे बड़ डेटा को आपण मल्टीपली प्रोसेस कर दे पारे. बेनिफिट कौन? वेल मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम गुडा को रेस्पॉन्स टाइम ऑफ कंप्यूटर कमे दे बहुत शीघ्र कंप्यूटर रेस्पॉन्ड करिबा आपण फास्ट कंप्यूटर दे पाइबे. डेटा प्रोसेसिंग रे डिले हुएनी रिसोर्सेस तो शेयर होची और जदी बाय चांस आउट ऑफ ऑल द प्रोसेसर इफ वन प्रोसेसर फेल्स तेबे मध्य डेटा और से जो डेटा रो लोड अन्य गोटे प्रोसेसर ऊपर जाई कि ताको इवन कर दबो कमे दबो. देयर इज अ रिडक्शन ऑन लोड ऑन वन कंप्यूटर माने माइक्रो प्रोसेसर. एबे हमें देखिबा मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी प्रोसेसिंग आ भितरे डिफरेंस कोन सुबह टिके पढ़िले. आज्ञा सर. सर एडवांटेजेस ऑफ मल्टी प्रोसेसिंग डिफरेंस नहीं मल्टी प्रोग्रामिंग हां डिफरेंस. आज्ञा. मल्टी प्रोग्रामिंग involves execution of a portion of one program, then a portion of another, etc. in brief consecutive periods, whereas multiprocessing involves simultaneous execution of several program segments of the same or different programs. Next, I hope you understand. Multi programming रो माने होची गोटिए प्रोग्राम को portion one of the programs portion आउटे portion ए दीटा के एका संगरे चलिबो in brief consecutive period. मल्टी प्रोसेस रे एक्चुअली प्रोग्राम को भांगी दिया जीवो into different segments and प्रत्येक टी प्रोसेसर गोटे गोटे प्रोग्राम को प्रोसेस करिवे गोटे गोटे सेगमेंट को प्रोसेस करिवे. ता माने धरंतु वर्ड और पावर पॉइंट चलीची वर्ड और पावर पॉइंट को किछि समय वर्ड बाय यूजर 1 किछि समय वर्ड बाय यूजर 2 पावर पॉइंट बाय यूजर 2 एई भलिया जोटा प्रोसेस करतुबो सेटा होची मल्टीपल प्रोग्राम. मल्टी प्रोग्रामिंग कथा यूज करि पथंती खाली बुझिबा पय आपन को कहिछि. ठीक से भलिया मल्टी प्रोसेसिंग माने प्रोसेसर को भितरे कोनोसी प्रोग्राम रो कामटा को बांटी दिया जो. सपोज आपण कंट्रोल एस मारिले गोटे बड़ फाइल सेव होची संगे संग चारिटा को प्रोसेसर भितरे से प्रोसेसिंग वर्क टा को डिवाइड कर दिया जाए कि ताको करा जाय. सो रिजल्ट यू विल हैव अ फास्टर ऑपरेटिंग सिस्टम. डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स मींस गोटे जगह रे जो ऑपरेटिंग सिस्टम टा डेटा को गोटे नेटवर्क रे विभिन्न लोकेशन रे बांटी दिए. तो एथिरे से माने कौन करंती कोनसी गोटे रिमोट हार्डवेयर को एक्सेस करंती. जेमिति आपण मार्क करथिबे कि अनेक समय रे जते बेले कंप्यूटर रो कस्टमर केयर आपनकर पीसी रे थिबा कोनसी प्रॉब्लम को सॉल्व करिया को चेष्टा करे से माने रिमोटली आपनकर कंप्यूटर को एक्सेस करंती. ओके तो सेथरो से माने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कोनसी भी मैनर रे ताको एक्सेस करियो. This is called the distributed system. एथरे बेनिफिट रिसोर्स आपण शेयर करि परिबे आपनकर लोकेशन आपनकर फाइल टाको अन्य माने व्यवहार करि परिबे. Another one is RTOS or real time operating system. RTOS होची they provide absolute guarantee that critical tasks are completed on time.
फॉर एग्जांपल हमरो रोबोटिक्स हला, ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम हला, घरे आपण जो रेडियो ट्रांजिस्टर व्यवहार करचंती, कैलकुलेटर व्यवहार करचंती, गोटे साइंटिफिक कैलकुलेटर हला, आ भितर जो ऑपरेटिंग सिस्टम ता अछि सेटा होची आरटीओएस। एटा इनफैलेबल, एथिरे किछि चेंजेस आपण करि परिबे नाही। हार्ड आरटीओएस पूरा पूरी फिक्स्ड, सॉफ्ट आरटीओएस किछिटा काम को टिके प्रायोरिटाइज करती, जेमिति कि हाई एंड डिवाइसेस गुडा करे जो सिस्टम गुडा को डिजाइन करा जाय थाए से गुडा को मैन्युवरेबल रखा है थाए, माने आवश्यक पड़िले सेथरे चेंजेस तांको करियो कहिले दे विल डू, आरटीओएस विल अलाउ। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ द हार्डवेयर अगेन। वर्चुअल मशीन ऑपरेटिंग सिस्टम एटा गोटे एमिति ऑपरेटिंग सिस्टम जो थे कि यूजर्स ऑफ डिफरेंट कंप्यूटर, राइट, से ऑपरेटिंग सिस्टम टाको एमिति व्यवहार करन जेमति कि सेटा तांकर। फॉर एग्जांपल आपण कोन करछंती गोटे दीटा मोबाइल को फाइल शेयर रे एक्सेस करछंती, तो आपण कोन करछंती आपण को फोन रु ताकू फाइल पठौछंती, से रिसीव करूची, तार स्टोरेज लोकेशन टाको आपण देखि परछंती। सो एथिरे एका संगरे कोएक्सिस्टेंस को एटा लीड करे। एटा विंडोज रे भी अच्छी, जावा रे अच्छी, लाइनक्स रे अच्छी, बहुत गुडे कंप्यूटर प्रोग्राम रे वर्चुअल मशीन ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छी। जेहेतु वर्तमान समय रे मोबाइल डिवाइसेस आर क्वाइट पॉपुलर, सेति पई स्मार्टफोन, टैबलेट पीसी, मोबाइल फोन, पीडीए एथिरे जो ओएस लोड करा होची ताकू मोबाइल ओएस बोली कहा जाउची। फर्स्ट फ्री and open source fully customized mobile platform was Android, which is also very popular till today. आउ किछिटा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम आपन को देखियो को मिले, सिम्बियन, नोकिया सेल फोन्स जोटा आगुरु थिला, वर्तमान भी नोकिया पुनी रिमार्केट रे लॉन्च हे सरची। आर ऑपरेटिंग सिस्टम ना होची सिम्बियन। एप्पल फोन गुडा करो ये होची आईओएस और आईफोन ओएस, ठीक से बड़ी ब्लैकबेरी तार ऑपरेटिंग सिस्टम ना मध्य से ब्लैकबेरी। माइक्रोसॉफ्ट जेतेबेले मोबाइल इंडस्ट्री को एंटर कला, माइक्रोसॉफ्ट फोन 7 और 8 लॉन्च करथला, जोटा कि माइक्रोसॉफ्ट फोन रे मिले। पाम बोली गोटे कंपनी अछि, तार फोन होची पाम ओएस। सैमसंग आ गोटे पॉपुलर ब्रांड ऑफ मोबाइल फोन, तार ऑपरेटिंग सिस्टम ना होची बैडा। सिमिलरली नोकिया एंड इंटेल वर्तमान जॉइन करचंदी हातो टू कम अप विथ अ सॉल्यूशन called as MeeGo operating system। MeeGo एटा आगु ओपन सोर्स थिला, ताने केही भी ताको व्यवहार करि परथिले, किंतु वर्तमान एटा को चार्ज करा जाउछि, इट्स नॉट फ्री एनीमोर। नेक्स्ट मेमो, नोकिया, एटा ओपन सोर्स आगु थिला, एबे इट इज बीइंग चार्ज्ड। सो दिस इज व्हाट अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। आमे ऑलरेडी वर्चुअल मेमोरी विषय रे गोटे इंट्रोडक्शन पाइचे। एटा मेमोरी रो सेही पार्ट जोटा गोटे मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम रे सेपरेट ही की थाए, कंप्लीटली एटा फ्री थाए, दरकार पड़िले ऑपरेटिंग सिस्टम किंबा कंप्यूटर रो मेन मेमोरी ताकू एको एक्सेस करे। माने रखंतु कि वर्चुअल मेमोरी जदि बड़ा हला, प्रोग्रामर माने फिजिकल मेमोरी ऊपर थिबा बर्डन को कमे दे परिबे। नॉट ओनली दैट, बड़ बड़ प्रोग्राम गुडा को जते बेले एक्सपैंड करे, फुली रन करे, तांको वर्चुअल मेमोरी रो आवश्यकता पड़े। आउ गोटे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम एठी देछि कि एडवांटेज गला, डिसएडवांटेज कोन? वेल, आको एक्सेस करबा पई प्रोग्रामिंग रो नॉलेज दरकार, सेति पई इफ जदी आपन को प्रोग्राम रे एटा इनबिल्ट हेतो ताले से वर्चुअल मेमोरी को एक्सेस करियो। और जो प्रोग्राम गुडा करे एही एल्गोरिदम गुडा कथा है, से गुडा का एक्सपेंसिव प्रोग्राम, हजार हजार लक्ष लक्ष टंका पड़ी पारे। जदि एटा आपण केयरलेसली यूज करंती ताहले कंप्यूटर रो सिस्टम रो परफॉर्मेंस खराब हे जाई पारे। एबे हमें देखिबा पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम गुडा का कोन कोन। गोटे होची यूनिक्स, मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। थॉमसन एंड रिची बेल लैबोरेटरी रे तैयारी करथिले। It was the first operating system written in high-level language C,
Earlier operating systems were written in assembly language. Unix GUI को support करे सेथिपाई easy to use environment मध्ये आपण create करि परिबे. Thus, what is the structure of Unix? 3-layer: kernel or shell, application, utility. Shell होची kernel रो बाहर part. Kernel ताहरे कौन? Kernel होची core of an operating system. Core कहले बुझे जाए कौन मु कहबी एटा होची सेही जगह जोटी की सब जगह thread आसी की जोड़ी हिताए. It is the core part of the operating system, core part of the memory. ସବୁ ଯାକ modules ଗୁଡାକ ଏଇଥିରେ load ହେଇଥାଏ. Memory ଏଥିରେ ଥାଏ, application programs ଏଥିରେ ଥାଏ. ताकू generally आपण C drive under रे देखि पारत. Shell acts like an interface between user and the kernel. ये होची command interpreter. Applications has many utilities. ସେମାନେ editor ହେଇ ପାରନ୍ତି, offer many languages, debugger ହେଇ ପାରନ୍ତି. Why Unix is popular? प्रथम एटा गोटे एमिति प्रोग्रामिंग जाकु सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर सब कंप्यूटर रे आपण डाउनलोड करिकी व्यवहार करि परिबे. 2 नंबर एटा स्टेबल देन विंडोज सेति पई मेंटेनेंस कम रिक्वायर करे. 3 नंबर और सिक्योरिटी फीचर्स बहुत भलो. 4th, our processing power is greater than Windows. So these are the advantages, 4 advantages of Unix operating system. ताले popular काई नुहे? Popular एथिपाई नुहे कारण लोक माने Windows संगरे acquainted. Microsoft ता history रे अनेक गुडिये प्रकार रो operating system को काढिछि. The first one being DOS, full form disk operating system. एटा गोटे CUI operating system. DOS command line interface को व्यवहार करथला. एंड मनीष जो माने यूजर थिबे ताको कमांड गुडा को मन रखियो पड़तला. सेटा क्लिक कले चार्जर हेगी ओके गोटे लाइन से प्रिंट टाइपिंग राइटिंग हे जे. विंडोज फैमिली ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम रे आमे देखुचे अनेक गुडी वर्जन आसीची 95, 98, 2000, XP, Vista 7 and 8. फीचर जानचंदी प्रथम होची GUI. विंडो गोटे ऑपरेटिंग सिस्टम नुहे एटा गोटे एनवायरनमेंट कारण ए एनवायरनमेंट भितरे आपण अनेक गुडी नुवा नुवा एप्लीकेशन व्यवहार करि परिबे. नॉट ओनली दैट अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम गुडा को टेस्ट करिबार मध्य एबिलिटी विंडोज प्रोवाइड करे. विंडोज जो भली भाबरे हमें माइक्रो कंप्यूटर रे पाऊ सेउडा को जे सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग जने यूजर एट ए टाइम व्यवहार करिवो. हां से लोकटा चाहिले एका संगरे अनेक गुडी चेंजेस आन दे पारे. सो विंडोज 7 आउ 8 जहा को आपण एबे पॉपुलरली विंडोज 10 हिसाब रे पाउचंती. दिस इज अ मॉडिफाइड मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम. एथिरे गोटिए फाइल 256 कैरेक्टर पर्यंत स्टोर करि पारे. ओके फाइल नेम्स इट कैन कंटेन अप टू 256 कैरेक्टर्स. प्रकृतरे ये एतिकी परमिट करे नाही. it is much lesser. Windows 7 तार परफॉर्मेंस रिलायबिलिटी और सिक्योरिटी फीचर गुडा को पई पॉपुलर. आपण बे के 7 रे नुवा कथाटा कोन थिला टच स्क्रीन जोडे के आगुरु नथिला. नॉट ओनली दैट एथिरे आपण फाइल और प्रिंटर को क्विकली शेयर करि परिबे. विंडोज 8 है एटा 2012 रे लॉन्च हेतला. तार दीटा गोटे छी रेगुलर विंडोज 8 एंड विंडोज 8 प्रो. आपण जानि थिबे तो होम एडिशन प्रो एडिशन बोली कहउछन्ते. तो होम एडिशन टा बेसिक फीचर थाए. प्रो एडिशन रे अनेक गुडी एडिशनल फीचर थाए जोडा को गोटे कॉर्पोरेट किबा गोटे कंपनी को दरकार. लाइनक्स एटा गोटे मल्टीटास्किंग मल्टी यूजर ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम. विंडोज टा सिंगल यूजर हला बेलको एटा गोटे मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम. लाइनस टॉर्वाल्ड ताको डेवलप करिथिले. एटा गोटे फ्री प्रोजेक्ट थिला जोथे कि पृथ्वी रो अनेक गुडे प्रोग्रामर मिसिकी याको डेवलप करिथिले. एटा यूनिक्स रो गोटे क्लोन कमर्शियली कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ एनी कमर्शियल कॉपीराइट सॉफ्टवेयर. दैट मींस पूरा वर्ल्ड आको व्यवहार करि परिबो. राइट. The Torvald holds the copyright but permits
free distribution of the source code. Tathapi Linux being a free and good software not being used because of the popularity of Windows again. ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ୍ରୋମ୍ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ଆସିଛି ଗୁଗଲ କ୍ରୋମ୍ ଟାକୁ ଆପଣ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଟା ବେସିକାଲି ବ୍ରାଉଜର କିନ୍ତୁ କ୍ରୋମ୍ ଓଏସ୍ ଏଟା ଲାଇନକ୍ସ ଆଉ ଗୁଗଲ ର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କମ୍ବାଇନ୍ଡ ଏଫର୍ଟ ଓକେ ଏଟା ଏକ୍ସପାଣ୍ଡେଡ ଭର୍ଜନ ଅଫ କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର ରେ ଯେତିକି ଫିଚର ଥିଲା ତାକୁ ଆହୁରି ଏନହାନ୍ସ କରିକି ଓଏସ୍ ଟାକୁ ତିଆରି କରାଯାଇଛି Mac OS X or Mac OS X ଏଟା ହଉଛି ଗୋଟେ GUI এটা Apple computer Macintosh PCs ରେ preload କରିକି ଦିଏ multi user multitasking and Unix like operating system with a lot of security features ସେଥିପାଇଁ ଏଟା ବହୁତ popular okay next boss Bharat operating system solutions ଏଟା ଗୋଟେ OS ଯୋଉଟା କି CDAC ତିଆରି କରିଛି on the basis of Linux এটা common document type ଗୁଡାକ ଏଥିରେ use करे it is bundled with Bharatiya OO a derivative of Open Office Suite तो एटा Open Office Suite सहित boss टे मिसिकी आसे so एमती मन रखन्तु Bharatiya OO Android विषय जानी चंती मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम PC नोटबुक को ऑपरेट करे Android जिते बेले आपण पांती ताकू तार जो एप्लिकेशन गुडा को डेवलप करिवे पई गोटे सॉफ्टवेयर किट को व्यवहार कर जाय ताना होची एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर किट सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम को मोबाइल फोन रे सिम्बियन नोकिया कहतली पर ओके सो ये इंटेल एक्सकेल प्रोसेसर को व्यवहार करे सो दीस आर द facts that you need to remember regarding operating system it kernel or thread विषय कहा जायछि kernel होछि the central controlling part of the operating system that implements most of the primitive functions thread कोन अच्छा deadlock कोन एटा गोटे नुवा एटा गोटे एमिति सिचुएशन हुए जोति कि multiple processors are waiting for each other to free resources that they have acquired ସେଥିପାଇଁ ଏକା संगे कोन करंती से माने जेहेतु मेमोरी गुडा को कंज्यूम कर दियंती प्रोसेस बेले बेले हॉल्ट हो जाए हैंग हो जाए बाकी सब जानी चंती बैच प्रोसेसिंग स्वैपिंग सो दिस आर ऑल कार किछि डाउट रहिला टॉपिक को नेकी जदि किछि डाउट रहिला परवर्ती समय रे पचरंतु at this level of awareness try to get acquainted with the terms and please do revise देखा अभी मैं अपन से तो पूरी तरह afternoon I'm keeping the class here. Goodbye.